Okay. So, well, we have seen that to every point of a differentiable manifold we can associate a linear space which we call tangent space. So, if M is a manifold, P is a point in M, then TPM is a real vector space, it is a tangent space at P, and P belongs to the manifold M, and this is in fact a linear space of dimension n. Of dimension n, and such a linear space is available at each point of the manifold. Now, we can, to every finite dimensional vector space you can find its dual. So, consider the dual of the tangent space, and I will denote it by Tp star m. This is the dual of Tpm, which is once again a vector space, and it consists of all linear functionals. So, set theoretically Tp star m is the collection of all linear maps. Let me denote them by omega or theta, whatever you call it. So, theta, it consists of all linear maps. These are linear. And it turns out to be a vector space of the same dimension as that of TPM. So, ये भी एक n डायमेंशन का एक वेक्टर स्पेस है जो हर पॉइंट पे आपको अवेलेबल है. All right. So, if I take any theta p in Tp star m, if theta p is a member of Tp star m, then what will happen? Then theta p will be a linear map from Tpm to R, and it will satisfy the following condition: alpha time, it will operate on tangent vectors to produce real number. So, the first thing that we observe about theta p is that theta p operates on tangent vectors and it produces real numbers. And number 2, theta p, when it operates on a linear combination of two tangent vectors, it gives you alpha times theta p xp plus beta times theta p yp, where alpha beta are real numbers. All right. We call these elements of Tp star m as covectors. The elements of Tpm we call tangent vectors, and these elements are dual of the tangent vectors. So, we call elements of Tp star m elements of Tp star m as covectors. We can say that linear functional. Linear functional. Yes. We can say that linear functional. लीनियर फंक्शनल है, यस, चूँकि यहाँ फील्ड है तो ये लीनियर फंक्शनल है. ठीक है. ऑल राइट. Its name is covector. So, every covector is a linear functional. So, for every TPM we always have a TP star. Yes. It was naturally. It is automatically true. हम हर finite dimensional vector space का dual exist करता है. हर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का डुअल एग्जिस्ट करता है. तो टेंजेंट स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो एल्जेब्रिकली इसका एक एल्जेब्रिक डुअल होगा जिसको हम Tp स्टार m कहेंगे, और उसके एलिमेंट्स जो हैं वो लीनियर मैप्स हैं फ्रॉम Tpm टू R. आप चाहें तो उसको फंक्शनल भी बोल सकते हैं. But it is not true in infinite dimensional case. ये इन्फिनिट डायमेंशनल के लिए ट्रू नहीं है, हमेशा एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. नहीं, चूँकि फाइनाइट डायमेंशनल आप डील कर रहे हो तो ये इंश्योर्ड है कि हाँ इसका डुअल होगा. ठीक है ना. ओके. ऑलराइट.
So we will see here what the properties it will be preserving. It will be seen What? what like TPM have several properties. So we will be interested now what the properties TP star M will be preserving. Is it so? Sir? You see, what are these properties of tangent effect? It's a simple real vector space. So जो vector space के अंदर properties होती हैं वही होती हैं, Sorry. और ये भी एक फाइन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसके अंदर भी वही सारी प्रॉपर्टीज, नथिंग स्पेशल. अच्छा, अब नाउ वी विल फाइंड आउट बेसिस फॉर टीपी स्टार और कैनोनिकल बेसिस. सो लेट अस वर्क आउट कैनोनिकल बेसिस ऑफ टीपी स्टार. So geometrically, how will we picture this star and like TPM we have started saying कि नो पिक्चर्स बनाना जो है वो जस्टिफाइड नहीं होगा, बिकॉज डुअल के एलिमेंट्स जो हैं वो मैप्स होते हैं. मैप्स को कैसे पिक्चराइज करोगे? मैप को ज़्यादा हम ज्योमेट्री वाले करते क्या है कि उनके ग्राफ को पिक्चराइज कर लेते हैं, लेकिन मैप्स को नहीं पिक्चराइज करते. जो लीनियर ऑब्जेक्ट हैं उनको तो कर सकते हैं आप. सो यू हैव टू थिंक ऑफ मैप्स. दे आर मैप्स which are taking the vector from TPM टू आर. sending it to R. आर चूँकि TPM वेक्टर स्पेस रियल वेक्टर स्पेस है, तो यहाँ पे हमने फील्ड जो है वो आर ही रखी. अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स मैनीफोल्ड में काम कर रहे होते आप तो फील्ड हम सी लेते. All right, so now let us try to work out a basis for TP star M. So look here, yesterday I was talking about the differential of f. In particular, if f is a real valued function, differentiable real valued function on M, then we had noticed that its differential at a point P is something which operates on tangent vector, and DFP becomes a linear map. Differential of every function is a linear map, every map rather, and it was in fact obtained as XPF. ये हमको मिल गया था कि जब DFP किसी tangent vector पे ऑपरेट करता है तो हमको ये रियल नंबर देता है. When XP operates on a function, it gives you a real number. So we know that this is a real number. So what you have been observing here is that differential of f is a linear map. From where to where? From the tangent space of M to R. So it is a covector. So this implies that DFP is a covector. Differential of f at every point P is a covector. Is a covector at P, and this happens with every point. P is an arbitrary point. Okay, so in particular, you have functions from coordinate neighborhood to R. You call them xi's. If you have a local coordinate neighborhood uxi, then xi's are real valued function from the neighborhood u into R. Is it right? पूरे मैनीफोल्ड पे नहीं है, एक ओपन सबसेट पे है, तब भी रियल वैल्यूड फंक्शन तो है. और हर रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए अगर इसके अंदर कोई पॉइंट P ले लूँ तो इसका भी मुझे डिफरेंशियल मिल जाएगा. At the point P, I have chosen a point from here. So dxi at P will operate on xp, and it will give me xp operating on xi by this formula. And you know what xp xi is. If you know the local expression of xp, this xp xi are precisely the component xi i's. Where xi I is what? Where xp is xi I into del upon del xi at P. So this quantity is in fact xi I. टेंजेंट वेक्टर के लोकल फॉर्म में जो डायरेक्ट है तो मतलब
एक्चुअली XP XI होता है। वो एक्स पी एक्स आई है, लेकिन इतना बड़ा लिखने की जगह है बार बार इतना बड़ा लिखें, हमने एक छोटा सा सिंबल अडॉप्ट कर रखा है जाई आई। All right, so I have seen that this is an important relation. Let me call it number 1, and now I have to find out a basis for the tangent space. Basis को अगर आप याद करें, टेंजेंट स्पेस कोई वेक्टर स्पेस है, उसके डुअल की बेसिस निकालने का तरीका क्या है? Suppose I have a vector space V whose basis consists of vector e1, e2, e3, en. तो इसकी डुअल बेसिस क्या होगी, को बेसिस क्या होगी? हाँ, आप जब ने लीनियर स्पेसेस पढ़े होंगे तो उस वक्त ये बात समझी होगी कि सपोज e1, e2, e3, en it's a basis, suppose it's a basis of a vector space V, basis of a vector space V. Suppose this is V, it is the space V. इसको स्पैन जो है, इसका जो स्पैन है वो मान लीजिए V, ठीक है? तो ये e1, e2 आर द बेसिस वेक्टर। ऑलराइट, सो जो इसका डुअल स्पेस होगा दैट विल बी जनरेटेड बाय समथिंग के से e1, e2, e3, en. It will be generated by capital EIs, where each member of this is a linear functional, okay, with the property that when EI operates on small ej, it gives you Kronecker delta. This is the defining property of these capital EIs. तो ऐसे एलिमेंट जो के अंदर ये प्रॉपर्टी है वो बेसिस फॉर्म करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड इसका रूल है for dual basis. So what I am doing is I already know that del upon del xi at p such elements I is running from 1 to n, this form a basis of the tangent space. So I have to search out those covectors which operating on del upon del xi gives me the Kronecker delta. Sir, my question is that Kronecker delta is related between basis of vector space and basis of covector space always. Yes. यानी कि आपको जब E1 को E2 पे ऑपरेट करें तो ज़ीरो मिल जाए, Yes. E1 को किसी और E2 से लेके En, Ek पे ऑपरेट करें तो ज़ीरो मिले whenever k is different from 1. ऐसी औरों का भी है, और जब E1 को E1 पे ऑपरेट करें तो 1 मिल जाए। ऐसी चीज़ को हम क्रोनेकर डेल्टा बोलते हैं। यही मतलब जो एक्सप्रेशन है यही क्रोनेकर डेल्टा से ही निकल जाता है, इसी को क्रोनेकर डेल्टा बोलते हैं। क्रोनेकर डेल्टा है। ऑलराइट, तो अब मुझे तलाश है ऐसे ऑब्जेक्ट की जो डेल अपॉन डेल एक्स आई पे ऑपरेट करके क्रोनेकर डेल्टा दे दें। सो लुक हियर, नाउ इन फॉर्मूला नंबर 1 आई विल रिप्लेस एक्स पी बाई डेल अपॉन डेल एक्स जे। सो डी एक्स आई at p operating on del upon del xj. By this formula you may call it number 2 and you better call this as number 1. So make use of formula number 1 rather than 2. So by formula 1 I can write down this as del upon del xj at p, ये भी p पे ही है, operating on xp operating on f. What is f over here? Xi. Okay, so what do you get? You get del xi
over del xj evaluated at p, which is Kronecker delta ij. Okay. So what you are searching is this. dxi co-basis. So that gives you that dxi's are the covectors which form a basis of the Tp star m. So this implies that dxi's at p with I running from 1 to n forms a basis of Tp star m. That is a co-basis of Tpm. That is a co-basis of Tpm. Okay. Now, and once you say that it's a co-basis, every linear differential map, every linear map from tangent space to R must be written as a linear combination of dxi. Hence, if omega p or theta p कह रहे हो तो theta p कह, if theta p is a covector, then we can write down theta p as some linear combination of dxi, where this will be the local expression, this will be the expression of theta p, where what are these coefficients theta i's? What do? You operate theta p on del upon del xj. Okay, where theta I is equal to theta p operating on del upon del xi. ठीक है, आप दोनों साइड्स को del upon del xi पे ऑपरेट करके देख लीजिए. When dxi will operate on del upon del xi, you will be getting 1. Is it right? And therefore it is theta I. Okay. So this theta I can be computed like this. Now in particular, if you are searching for DFP, DFP is an example of a covector. So in particular, DFP will be equal to what? It will be some coefficient over here, I don't know, let me call it some omega I into dxi. Is it right? At p. ठीक है ना, ये ओमेगा आइज भी एट पी है. सो वेयर ओमेगा आइज, ये नंबर 3 कहिए इसको आप, वेयर ओमेगा आइज इज इक्वल टू व्हाट, अभी बताया, DFP ऑपरेटिंग ऑन को बेसिस, सॉरी बेसिस डेल अपॉन I at p. ठीक है. Now by formula 1, the right hand side will become what? It is del upon del xi at p operating on, बोलिए, अरे भाई अभी फॉर्मूला 1 क्या बताता है? DFP XP is equal to what? It is equal to XPF, यही है ना? So use this. So F, what is this? F. So you have got it. This implies that omega I is equal to del F upon del xi at p.
Now substitute this value of omega I over here. Substituting this value, in 3, see what do you get? You get dfp equal to omega I की जगह del f upon del xi at p into dxi at p. This is a known formula of calculus which you are already familiar with. Now when you deal it as a covector on the manifold at a point P, you obtain the same formula. Okay? All right. अच्छा, अब इसको ग्लोबलाइजेशन भी इसका करना है, because you will be dealing with covector which are globally defined. We will be calling them linear differential forms. But before doing that, I need to discuss the law of transformation. So given a, पहले ग्लोबलाइज कर लेते हैं, उसके बाद we will talk about law of transformation. So globalization. Of covectors. जैसे टेंजेंट वेक्टर से हम वेक्टर फील्ड पे आए थे, वो एक स्टैंडर्ड तरीका है चीज़ों को ग्लोबलाइज करने का. एट ए पॉइंट यू हैव ए टेंजेंट वेक्टर, देन व्हाट यू डू, यू थिंक ऑफ मैप्स विच टू एवरी पॉइंट ऑफ अ मैनिफोल्ड एसोसिएट ए टेंजेंट वेक्टर. The same thing we will be doing over here. We will think of those maps which to every point of the manifold give you a covector. I will call that object to be a linear differential form. Okay. So straight away let me define first what is a global covector. So a map omega on M always mean a differentiable manifold of dimension n. A map omega on M is called a linear differential form. Or in short, a one form, or in short, a one form. If to each point P in M, to each point P in M, omega associates a covector at P. Symbolically, omega is something which to every point P associates omega P. What is this? This is an element of TP star. ठीक है? So such an object is called a one form or a linear differential form. अब देखें इसको एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए. जैसे आपने हर पॉइंट पे कोवेक्टर का एक्सप्रेशन निकाला है, आप एटलीस्ट इन ए कोऑर्डिनेट नेबरहुड लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म का एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं. So now I will think of the expression for omega. आप देखिए कि ओमेगा p का मैंने एक्सप्रेशन कैसे लिखा है. ओमेगा p का एक्सप्रेशन लिखा है सम स्केलर्स ओमेगा i's into dxi at p, where omega i's are
scalars, real numbers. Okay, and this expression I have written in a coordinate neighborhood. Uxi is a coordinate neighborhood. All these things are understood. I don't mention again and again, but these are the things which you know. वैसे भी obvious है because of the fact that ये coordinates जो हैं ये available हैं सिर्फ u के ऊपर और यहाँ पे dxi's आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये expression valid है हमारा सिर्फ coordinate neighborhood u के ऊपर. All right. Now what I will be doing, okay, जैसा बंद कर लीजिए, हाँ बंद कर लीजिए, थोड़ा देर पास कर देते हैं. All right. So we were talking about so we were talking about the globalization of the covectors. We will call them one forms. So as you know that a one form at a point P has this expression on a coordinate neighborhood U. So what I want to do is I will be thinking of a function whose value at every point in U is omega I. So what you do, you consider a function, I will still denote it by omega I. Let me denote it by omega I p. ठीक है ना? So omega I is a function which associates to each point P omega I p. Okay? So this will be a function. So यहाँ पे function हो जाएगा. So I will consider a one form omega whose coefficients are these functions. I will simply call them omega i's, and these dxi's without p is also meaningful. What these dxi's are? Dxi's are those quantities whose value at p is dxi p. Is it right? अब है ये कि ये simply u पे define है, because xi makes sense only on u. So this object is a, still I will call it a one form, but it is defined on every point of u. Is it right? Yes, sir. But its coefficient is no more a scalar, it's a function. Similarly, it is no more a covector at p, it is a covector which is defined at least on whole of u. All right? Yes, yes. तो अभी पहले स्टेप में हम इतना ही कर सके कि हम एक फॉर्म डिफाइन कर पा रहे हैं जो कि सिर्फ u पे डिफाइंड है. नाउ यू हैव टू गो बियॉन्ड u. ए वन फॉर्म विच वर्क्स ऑन द एंटायर मैनिफोल्ड. ठीक है, अब आप ज़रा सा ये चीज़ गौर कीजिए कि पूरा मैनिफोल्ड है, ठीक है, और यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट p where only coordinate system is xi. At some other point you have another neighborhood v, and the coordinate system are not xi's but are something yi's. I want a one form which is defined over here as well as over here, over here, over here, everywhere. तो ये जो फंक्शंस आपके पास आए थे ओमेगा आइज, पहले तो इसको स्ट्रेच कीजिए so that you get a function which is defined on whole of m. तो मान लीजिए यहाँ पे फंक्शन ओमेगा आई था, लेकिन इस नेबरहुड में भी तो कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन ओमेगा पी का है, वहाँ पे भी तो कुछ फंक्शंस हैं, आप उनको कुछ थीटा आइज कह दीजिए, कहीं पे कुछ और ईटा आइज कह दीजिए, कहीं कुछ कह दीजिए. सो नाउ यू हैव a function whose values are there everywhere in all neighborhoods. Is it right? तो वो जो मैंने स्ट्रेचिंग यहाँ की थी ओमेगा पी की, that is not stretchable only up to a coordinate neighborhood, it is stretchable to the entire manifold. Is it right? Yes, yes. So these, in the next step I will think of a function, still I will call them omega i's, which what they do to every point of p, they give me some scalar omega I p. p नीचे लिख रहे हैं omega I p. Okay, and dxi, when I talk of dxi,
When you are in a coordinate neighborhood uxi, this is dxi. When I am in the coordinate neighborhood v, it is dyi, and so on. So there is a global expression also. Okay? So जब अब मेरी ओमेगा सिर्फ u पे रहेगी तो मेरा एक्सप्रेशन होगा ओमेगा आई पी डी एक्स आई पी और ओमेगा आई डी एक्स आई. लेकिन जब हम ओमेगा को रेस्ट्रिक्ट करेंगे इस नेबरहुड में, देन आवर एक्सप्रेशन विल बी ओमेगा आई डी वाई आई. So this varies on the entire manifold. Okay? So such a linear differential form is called a global form. It's a global form whose local expression I can work out all the time. So the local expression of a one form is omega I dxi, where omega i's are functions on manifold and dxi's are what? Are also one forms, but they are basic one forms which work only in a coordinate neighborhood uxi. आप जैसे जैसे दूसरी नेबरहुड में जाएंगे इसका एक्सप्रेशन वहाँ पे कुछ दूसरा हो जाएगा. ठीक है, डी वाई आईज हो जाएगा, कहीं डी जेड आई हो जाएगा, बट दिस विल बी द लुक. है ओमेगा आई कोई फंक्शन है, सेम क्या मतलब है, वो कुछ वो फंक्शन है, फंक्शन के बारे में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज हैं. ठीक है. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ वन फॉर्म. ठीक है. So once you get hold of a local expression of a globally defined one form, I can talk of transformation, coordinate transformation. अगर मैं fixed one form की बात करता at a point, तो transformation will not make sense. Is it right? So now transformation makes sense when you are dealing with a global object. उसका local expression इस neighborhood में ये है, दूसरी neighborhood में क्या होगा. If suppose the two neighborhood intersect, if the two coordinate neighborhoods overlap, that is U intersection V is non-empty. Okay. So coordinate neighborhood are what? Suppose u के ऊपर coordinates हैं xi and v के ऊपर coordinates हैं x dash I. Okay. So what will happen to these coefficients when you go from xi to xi dash, or you come from xi dash to xi? So this is the question before us. So now I am talking of coordinate transformation. Okay, law of transformation. Law of transformation. For the component of one form. So suppose on uxi, omega is written as omega I dxi. Okay. And on v x dash I, omega is written as some omega dash I dx dash I. ठीक है ना. So this implies, so overlap ऐसे हो रहा है कि ये u है और ये v है. तो ये law of transformation इस intersection portion में valid होगा. यहाँ पे दोनों coordinates available हैं. So at this point these two objects are same. So omega I dxi
is equal to omega dash I dx dash I. Okay. Now dxi in terms of dx dash I, what will be this? dxi will be what? आपको याद है df क्या लिखते हैं आप? df को लिखते हैं del f अपॉन del xi इंटू dxi, यही लिखते हैं ना, अभी फार्मूला हमने बनाया. तो dxi को, तो I will consider these xi's as functions on this part. Is it right? So xi are coordinates over here. xi dash are also coordinates over here. ये भी available है. So I will consider these as functions and I will differentiate it with respect to x dash I. So dxi will be equal to, let me write down over here, it will be delta xi upon delta dash xj into dx dash j. Is it okay? By this formula, I am writing it. So left hand side, this implies कि omega I dxi की जगह मैं लिखूँगा del xi upon del x dash j into dxj dash j. अच्छा, since these I in the right side are also dummy indices, मुझे शुरू से यहाँ j लिख लेना चाहिए था. डमी इंडिसेस का नाम आप बदल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना. सो आई कैन चेंज द नेम. सो दिस विल बिकम ओमेगा डैश जे इंटू डी एक्स डैश. ठीक है, ये दो कोवेक्टर्स को आप कंपेयर कर रहे हैं, ग्लोबल हैं वो कोवेक्टर. तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ डी एक्स डैश जे है, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ डी एक्स डैश जे है. जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं. सो व्हाट फॉलोज फ्रॉम हेयर इज, यहाँ पे कंपोनेंट जेथ कंपोनेंट क्या है, ओमेगा डैश जे. दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा आई डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स डैश जे. So this is the law of transformation under which the components of a one form transform. अब आप देखिएगा, अगर if you look at the laws of transformation for vector field and for one form, you will notice that they are just opposite to each other. जब आपने x का law of transformation xi I का लिखा था तो क्या था वो? In that case the xi dash I क्या था? xi dash I was equal to क्या था? xi j delta x dash I upon delta x j. ये था law of transformation. In this case dashes are coming up, non dashes are down. Where it is just opposite, dashes are coming down and non dashes are up. तो ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं ये इस सेंस में एक दूसरे से अलग है, मतलब बिल्कुल अपोजिट टू ईच अदर. एक अगर स्पेस का वेक्टर है तो दूसरा उसके डुअल का वेक्टर है, ठीक है ना. सो दिस इज़ द टू डिफरेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. इसी वजह से अगर आप टेंसर नोटेशन में बात करें, सो यू विल से दैट द वेक्टर फील्ड्स आर इन फैक्ट covectors, okay, contravariant vector, and these one forms are covariant vectors. All right, okay, this was the law of transformation, and now I must talk about tensors of higher rank also. So अभी तो हम one forms को देख रहे थे as linear maps. We go a step further and we will talk of bilinear, trilinear and multilinear maps. Okay, so tensors of higher order. Tensors. So you just seen that a one form at a point P is a map from the tangent space into R, and this map should be linear.
Now, instead of one TPM, if I consider two copies of the tangent space, that is TPM, Cartesian product TPM, and I consider maps which are bilinear. Okay, so these maps, you can call them as T or whatever you call it. A bilinear map from TPM cross TPM to R is called a covariant tensor of order 2. Okay, linear map from TPM to R is called simply a covariant tensor of order 1. We are all calling it just a covector, but this will be called a covariant tensor. So a bilinear map, यहीं पे ऊपर लिख लीजिए, a bilinear map T from TPM cross TPM to R is called a covariant tensor. Of order 2, or we denote it by T02. अगर आपके सामने T02 लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि दिस इज सम कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2. So if T is a covariant tensor, so a covariant tensor, obviously, a covariant tensor of order 2 satisfies the following. जो इसकी डिफाइनिंग चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए कि व्हाट टी विल डू, कोवेरिएंट टेंसर, इसका नाम रख दीजिए टी. व्हाट इट विल डू, इट विल ऑपरेट ऑन ए पेयर ऑफ टेंजेंट वेक्टर एक्स पी एंड वाई पी. ठीक है, इसके पास दो स्लॉट्स हैं एंड इट विल प्रोड्यूस ए रियल नंबर. एंड नंबर 1, नंबर 2, T is linear in both the slots. If I replace xp by a linear combination of two vectors, say alpha time xp plus beta times yp, and over here some other vector zp, then these alpha beta will come out, that is it will be alpha times T of xp zp plus beta times T of ypzp. Similarly, the linearity in the second slot. Linearity in the second slot. So a covariant tensor of order 2 will definitely satisfies these two properties. That's why it's called bilinear. That is why it is bilinear, because For first slot as well as it is linear in both the slots. So that is why we call it a bilinear map. Now the next is the product. sum and sum of two vectors and then product. सम भी डिफाइन करेंगे और प्रोडक्ट पहले डिफाइन करूँगा मैं. एक चीज़ उससे पहले और कि इफ़ यू हैव दिस सेट ऑफ ऑल कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, अगर ये कलेक्शन ले लें एट ए पॉइंट P, then it will become a vector space. So this is an observation, the set of all covariant tensors of order 2, covariant tensors of order
2 forms a vector space, forms a real vector space. You may denote it by some symbol. अब इसको VP से डिनोट करूँगा फिलहाल मैं, बाद में नोटेशन चेंज हो जाएगा. Okay. So what is VP? VP is the set of all bilinear maps from TPM to TPM cross TPM to R. So VP is the set of all bilinear maps T from TPM product TPM into R, and the maps are bilinear. ये थोड़ी देर अपने दिमाग में इसको रियलाइज़ कर लीजिए कि ये कैसे वेक्टर स्पेस होगा. उसके लिए आपको एक एडिशन चाहिए होगा और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन आएगा. तो इट इज़ ईजी टू सी. आई विल डिफाइन पॉइंट वाइज एडिशन. सपोज आई हैव टू कोवेरिएंट टेंसर्स से T1 and T2. I will define their sum as, since T1, T2 both operate on pair of tangent vectors, so this sum will also should operate on pair of tangent vector xp yp, and it should be defined as T1 of xp plus xp yp plus T2 of xp yp. This is how a sum is defined. लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी बारीक बात ये है कि यहाँ पे कह के आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए. पहले अपने आप को कन्विंस करना चाहिए कि जो डेफिनेशन आपने ऐसी सोच के लिख दी, कुछ सोच के, क्या वो कोवेरिएंट टेंसर दे रही है आपको? नहीं दे रही. अगर ये ऑब्जेक्ट जो ब्रैकेट में लिखा है, इफ़ इट इज़ नॉट ए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, एवरीथिंग विल बी फॉल्स. तो यू मस्ट चेक द बाइलिनियरिटी ऑफ T1 प्लस T2. इसके अंदर बाइलिनियरिटी ही है डिफाइनिंग कर प्रॉपर्टी, और कोई दूसरी चीज़ नहीं है. सो आई विल एडवाइज यू टू चेक द बाइलिनियरिटी ऑफ T1 प्लस T2. अगर वो बात सही है तो ठीक है, ये वैलिड ऑपरेशन है. ओके. अब बाकी और चीज़ है. हाँ, इट विल नॉट. दैट्स राइट. तो जो ऑपरेशन आप प्रपोज कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बाज़ चीज़ें बिल्कुल इंट्यूशन से लिखी जाती हैं और इंट्यूशन कभी कभी गलत भी हो जाता है. तो वन हैज़ टू बी केयरफुल. और बाकी चीज़ें इसके अलावा और भी हैं. मसलन इसके अंदर ग्रुप, अबिलियन ग्रुप की सारी बातें हैं. इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. इसके अंदर एक ज़ीरो टेंसर ऑब्वियसली इज़ ए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, वो भी देखने की बात है. और हर टेंसर का एक नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है और एडिटिव इन्वर्स. वो सारी चीज़ें गौर करके आप ये यहाँ पे कहेंगे कि ये जो है एक स्पेस VP जो है वो अबिलियन ग्रुप है. ये छोटे छोटे से कंप्यूटेशन है, ये कर लेना चाहिए. ओके. And then you need to know the multiplication by scalars. So if I take alpha scalar, real number, and T a covariant tensor of rank 2, I am calling it VP, then alpha T must be defined. So we propose the definition of alpha T as xpyp equal to alpha times T of xpyp. यहाँ पे भी एक मिनट रुक के सोच लीजिएगा कि ये कैसे कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 हो जाता है, और उसके बाद फिर इसके अंदर दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज विल गिव यू व्हाट? अल्फा प्लस बीटा टाइम्स टी मस्ट बी इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी. नेक्स्ट, अल्फा टाइम्स T1 प्लस T2 इज इक्वल टू अल्फा T1 प्लस अल्फा T2. 1 dot T is also equal to T, etc. So, and therefore you will say कि yes, this VP is a real vector space. Dimension की बात तो basis के बाद तय हो जाएगी. Once you determine a basis, you know the dimension also. All right.
तो अभी मैं 2 ऑर्डर के ही कोवेरिएंट टेंसर डिस्कस कर रहा हूँ और 2 से फिर हम हायर में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे चीज़ों को समझना आसान है. All right, now should I talk about dimension or product? Okay, so now first let me talk of product. Okay, so consider, so we know that dxi's at P are covectors. Okay. dxi at P's are covectors. एक चीज़ इससे पहले मैं एक चीज़ और कर लूँ, उसके बाद I will come to this point. Suppose I have 2 covariant tensor. Let T1 and T2 be 2 covariant tensors. Of order 2, of course. Then we define a product of T1 and T2. Okay, or be 2 covectors. Instead of tensor, you take 2 covectors. 2 covectors at P. Then we define the product. एक खास किस्म की प्रोडक्ट है. We define the product of T1 and T2 and we call it tensor product. T1 product T2. ठीक है. And I define it as a map on the Cartesian product of the tangent space. So it must operate on x comma y, xp comma yp. And I propose the definition as T1 xp into T2 xp yp. देख लीजिए, सिंपल सी प्रोडक्ट डिफाइन करी. T1 को पहले वाले पे ऑपरेट कर दिया और T2 को दूसरे वाले पे ऑपरेट कर दिया, और इससे कुछ बना या नहीं बना ये देखना है. तो यहाँ से एक चीज़ जो ये ब्रैकेट में लिखी है, दैट इज इट वर्क्स ऑन ए पेयर ऑफ टेंजेंट वेक्टर. दिस इज वन थिंग दैट वी सी. सेकेंड थिंग दैट वी वांट टू सी इज वेदर इट्स बाइलिनियर और नॉट. You will notice, so this becomes a real number for sure, because T1 xp is a real number, covector operating on a vector gives you real number. Same thing with this. So this is an ordinary product of 2 real number, so it must be a real number. So right side is a real number. So T1 tensor product T2 operating on a pair of vectors gives you a real number. So it must be a map from here to here. Next, I will check whether it satisfies bilinearity or not. So for that, what I will be doing, I will be checking up. In place of xp, I will write down xp plus yp, और सेकेंड स्लॉट में कुछ zp कर देता हूँ. So क्या होगा यहाँ पे? You will be having T1 operating on xp plus yp multiplied by T2 operating on ZP. यही आएगा इस डेफिनेशन से. और T1 बाइलिनियर. So the T1 xp plus T2 yp, sorry T1 yp, and the whole thing is being multiplied by T2 zp. Now you have 3 real numbers written in this manner. 2 in the bracket and the third outside the bracket. So distributive property will hold for this addition of real number
and this multiplication of real numbers. So these are simple real numbers, तो यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं है. It will be T1xp into T2zp plus T1yp into T2zp. Now apply the definition. What is this? Let me write down here. Yes. Yes, so the right side is, this is T1 tensor product T2 operating on XPZP plus T1 tensor T2 YPZP. क्या नतीजा निकला कि दिस डिस्ट्रीब्यूट्स, पहले स्लॉट में ये लीनियर है, सिमिलरली इट इज़ लीनियर इन द सेकंड स्लॉट. बिल्कुल वही कंप्यूटेशन, कोई फ़र्क नहीं है. This look like product look like inner product types. नहीं, एक्चुअली इनर प्रोडक्ट भी बाइलीनियर होता है. Yes, yes. तो मगर ये जर्नल है Condition वो, हाँ, उसमें इनर प्रोडक्ट की और चीज़ें भी होती हैं. इनर प्रोडक्ट में पॉजिटिव डेफिनेट होता है, सिमेट्रिक होता है. यहाँ मैं कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा, पॉजिटिवनेस भी नहीं डिमांड कर रहा और सिमेट्री भी नहीं डिमांड कर रहा. वो पॉजिटिव उस केस में होता है फील्ड हमारे पास रियल हो, वरना वो नहीं, इनर प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव डेफिनेट होता है, हमेशा पॉजिटिव. conjugate linear भी होता है. Conjugate linear. नहीं, कॉन्जुगेट लीनियर अलग चीज़ है भाई, वो अलग चीज़ है. पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब ये होता है कि टी ऑफ एक्स एक्स, इस पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब ये होता है. Yes, yes. सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग. तो ठीक है, बाइलिनियरिटी तो आपको मिल गई कि वो चूँकि इनर प्रोडक्ट भी बाइलिनियर होता है, ये भी बाइलिनियर है, तो ये रिजेम्बलेंस तो है, मगर दिस इज़ मोर जनरल. ओके, ऑलराइट. नाउ आई हैव डिफाइंड द टेंसर प्रोडक्ट ऑफ टू कोवेक्टर्स. व्हाट आई एम लुकिंग फॉर द टेंसर प्रोडक्ट ऑफ टू स्पेसेस. अब स्पेसेस में ज़रा बात लंबी हो जाएगी, so I stop at this point. I will discuss the tensor product spaces in my next lecture. Okay.